Hello everyone, today we will be discussing the next topic, which is granulomatous inflammation. So granulomatous inflammation is a pattern of chronic inflammation. This can be induced by persistent T cell response to a certain infection, for example, tuberculosis. It can also be caused by immune mediated diseases and foreign bodies. Granulomas wall off the resistant stimulus without completely eradicating or degrading it, and this causes persistent inflammation that results in fibrosis and organ damage. So basically, granulomatous inflammation एक chronic inflammation के पैटर्न से आता है. इसमें क्या होता है, जैसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में परसिस्टेंट टी सेल या फिर कोई इन्फेक्शन है जो बहुत टाइम से है उसकी वजह से होता है, वैसे ही ये इन्फ्लेमेशन भी उसी पैटर्न पे है. ये इंड्यूस होती है जब कोई टी सेल रिस्पॉन्स बहुत टाइम तक परसिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस में जो कि एक इन्फेक्शन है, और कुछ इम्यून मीडिएटेड डिजीजेस एंड फॉरेन बॉडीज. इसमें ग्रैनुलोमास वॉल ऑफ कर देते हैं किसी भी रेजिस्टेंट स्टिमुलस को, उसको कम्प्लीटली हटाते नहीं हैं, ना कि उसको डिग्रेड करते हैं. इसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन है वो बहुत टाइम तक परसिस्ट करता है और फाइब्रोसिस और ऑर्गन का डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन होता है. In histology, if we see, there will be focus of epithelioid cells. Epithelioid cells are activated macrophages with abundant pink cytoplasm. They are surrounded by lymphocytes and multinucleated giant cells. Now, these multinucleated giant cells are formed by the fusion of several activated macrophages, and these are of two types. So, they can be caseating or non-caseating. In caseating, they are associated with central necrosis, and they are seen in infectious etiologies, for example, tuberculosis and fungal infections, whereas non-caseating granulomas do not have any central necrosis, and they are seen with non-infectious etiologies like sarcoidosis and Crohn's disease. This is an histological image of a granulomatous inflammation. There is a focus of epithelioid cells, and around them there will be lymphocytes and giant cells. सो बेसिकली हिस्टोलॉजी में ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन में बीच में काफ़ी सारे एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं. एपिथेलॉइड सेल्स बेसिकली मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि एक्टिवेटेड होते हैं, और इनका अबंडेंट पिंक साइटोप्लाज्म होता है. ये सराउंडेड होते हैं लिम्फोसाइट से और मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स से. मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स भी मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि बहुत सारे मिलके फ्यूजन बना देते हैं. और इसमें हिस्टोलॉजी टू टाइप्स में दिख सकती है हमें. एक तो केसिएटिंग ग्रैनुलोमास और नॉन केसिएटिंग ग्रैनुलोमास. केसिएटिंग अगर है तो उसमें सेंट्रल नेक्रोसिस होता है, और ये यूजुअली इन्फेक्शियस एटियोलॉजीज या फिर इन्फेक्शियस कॉजेज़ की वजह से होगा, जैसे ट्यूबरकुलोसिस और फंगल इन्फेक्शंस. और अगर नॉन केसिएटिंग ग्रैनुलोमास है तो उसमें नेक्रोसिस नहीं होती. नेक्रोसिस नहीं होती इसका मतलब वो नॉन इन्फेक्शियस एटियोलॉजी या कॉज होगा, जैसे कि सार्कोइडोसिस और क्रॉन्स डिजीज़. केसिएटिंग सी से शुरू होता है और सेंट्रल नेक्रोसिस भी सी से शुरू होता है, सो वी कैन लर्न केसिएटिंग में सेंट्रल नेक्रोसिस होगा. इस इमेज में देखें तो सेंटर में हमें दिखेंगे एपिथेलॉइड सेल्स जो कि है मैक्रोफेजेस एक्टिवेटेड फॉर्म में. उसके आसपास लिम्फोसाइट्स होंगे और जायंट सेल्स होंगे जो कि फ्यूजन होता है एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस का. Now let's discuss the mechanism of the granulomatous inflammation. So first there will be APC cells, and they will secrete interleukin 12. This will be presented to CD4 plus T helper cells, and they further will differentiate into T helper 1 cells. T helper 1 cells will secrete interferon gamma, which causes macrophage activation. Now, when the macrophages are activated, they increase the cytokine secretion like TNF, and this forms the epithelioid macrophages and giant cells. If any patient is given anti-TNF therapy, this causes the sequestering granulomas to break down, and it causes disseminated disease. So, we always have to check if the patient has latent TB or any granulomatous inflammation before starting anti-TNF therapy. Now, this is also associated with hypercalcemia because of the increased 1-alpha hydroxylase activity in activated macrophages, and this results in increased vitamin D activity. In this image, we can see
there is an antigen presenting cells that is secreting interleukin 12. The T helper cells further differentiate into T helper 1 cells. T helper 1 cells secrete interferon gamma. This causes the activation of macrophages, after which they secrete TNF, and this causes the formation of epithelioid cells, giant cells and lymphocytes. So basically granulomatous इन्फ्लेमेशन में मैकेनिज्म होता है, सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आती हैं, इंटरल्यूकिन 12 सिक्रीट करती हैं एंड प्रेजेंट करती हैं CD4 पॉजिटिव टी हेल्पर सेल्स को. टी हेल्पर सेल्स डिफ्रेंशिएट होकर टी हेल्पर 1 सेल्स बनते हैं और ये टी हेल्पर 1 सेल्स इंटरफेरॉन गामा सिक्रीट करते हैं जो कि मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर देते हैं. जब मैक्रोफेज एक्टिवेट होते हैं तो वो इंक्रीज करते हैं अपना साइटोकाइन सिक्रीशन, जैसे फॉर एग्जांपल टीएनएफ, और टीएनएफ एपिथेलॉइड मैक्रोफेजेस और जायंट सेल्स का फॉर्मेशन करता है. एंटी टीएनएफ थेरेपी अगर देते हैं तो सेक्वेस्टरिंग ग्रैनुलोमास जो थे वो ब्रेक डाउन होंगे, इसको बोलते हैं डिसेमिनेटेड डिजीज. इसीलिए अगर किसी को भी हम एंटी टीएनएफ थेरेपी दे रहे हैं तो ऑलवेज हमें चेक करना चाहिए अगर उसको लेटेंट टीबी तो नहीं है. नाउ इसमें एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस आते हैं और इस वजह से इनमें 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया भी कॉज करते हैं और इसमें विटामिन डी की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है. इस डायग्राम में एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है टी सेल को. ये इंटरल्यूकिन सिक्रीट करता है इंटरल्यूकिन 12. इसके बाद टी सेल डिफ्रेंशिएट होकर टी हेल्पर 1 सेल्स में बनते हैं और वो सिक्रीट करते हैं इंटरफेरॉन गामा. ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करके उनसे टीएनएफ सिक्रीट करवाते हैं मैक्रोफेजेस से, और जो ये टीएनएफ आते हैं इनकी वजह से जायंट सेल्स बनते हैं, लिम्फोसाइट्स बनते हैं और एपिथेलॉइड सेल्स बनते हैं. Now let's discuss the etiologies of granulomatous inflammation. First is the infectious, then is a non-infectious. In infectious, there are bacterial, fungal and parasitic infections. Bacterial infections are mycobacterium like tuberculosis, leprosy, Bartonella hensleyi, cat scratch disease, then stellate necrotizing granulomas, Listeria, monocytogenes, which is granulomatosis infantiseptica, Treponema pallidum, tertiary syphilis. Some fungal infections are endemic mycosis, which is histoplasmosis, and parasitic is schistosomiasis. This is a catalase positive organism which is there in chronic granulomatous disease. Now discussing non-infectious causes. They are immune mediated, vasculitis and foreign bodies. In immune mediated there will be sarcoidosis, Crohn's disease, primary biliary cholangitis, subacute thyroiditis, which is Decurvin granulomatous thyroiditis. Then vasculitis causes are granulomatosis with cholangitis, eosinophilic granulomatosis with cholangitis, giant cell temporal arteritis, Takasayu arteritis, and the foreign bodies causes are conditions like berylliosis, talcosis, hypersensitivity, pneumonitis. तो अब हम इनके कॉजेज डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट है इन्फेक्शियस कॉज, देन आते हैं नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज. इन्फेक्शियस में बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल और पैरासाइटिक हो सकता है. बैक्टीरिया में मायोबैक्टीरियम है जैसे ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रेसी. देन बार्टोनेला हेंसली जो कि कैट स्क्रैच डिजीज करवाता है, स्टेलेट नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमास कराता है. लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस ग्रेनुलोमेटोसिस इन्फेंटिसेप्टिका इससे होता है. एंड देन ट्रेपोनेमा पैलिडम जिससे टर्शरी सिफिलिस होता है. फंगल इन्फेक्शंस में एंडेमिक माइकोसिस है जैसे कि हिस्टोप्लाज्मोसिस. एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शंस है शिस्टोसोमियासिस, ये कैटलिस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, ये क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटोसिस डिजीज में मिलता है. नाउ इन्फेक्शियस कॉजेज में आता है इम्यून मेडिएटेड वैस्कुलाइटिस एंड फॉरेन बॉडीज. इम्यून मेडिएटेड में आते हैं सार्कोइडोसिस, क्रॉन्स डिजीज, प्राइमरी biliary cholangitis, subacute thyroiditis, ये एक द कर्विन और ग्रैनुलोमेटस है. देन वैस्कुलाइटिस कंडीशंस में ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस है, eosinophilic granulomatous with polyangiitis. Then third is giant cell temporal arteritis and Takasayu arteritis. Third, foreign bodies
कॉजेस हैं इसमें, जैसे कि बेरिलियोसिस, टालकोसिस, हाइपरसेंसिटिविटी, न्यूमोनाइटिस।